Hello student. So today we will see the comparison of half wave rectifier, full wave rectifier and bridge wave rectifier, right? Now full wave rectifier के दो type है, center tap full wave rectifier और bridge type full wave rectifier. Now in examination the question may be like that, compare half wave and full wave rectifier or compare the half flow, center tap full wave and bridge full wave rectifier. Okay. So in the previous videos, we have seen that the in detail explanation, the working, waveforms and all of half wave rectifier, full wave and bridge. Okay. So now we will see how to write a comparison in the examination. So number of diodes, if you remember the diagram, how many diodes we have used in the half wave rectifier? That is only one diode. Okay. Center tab में हमने कितने डायोड यूज किए थे? 2. ब्रिज वेव में 4 डायोड्स we have. Was secondary voltage is what in the half wave rectifier is Vm और यहाँ पे क्या होता है 2Vm होता है 2V और यहाँ पे ब्रिज वेव में क्या होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर में ओनली Vm. ओके नाउ द वेवफॉर्म ऑफ डीसी आउटपुट की वेवफॉर्म क्या है देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली एट द पॉजिटिव हाफ साइकिल विल गेट द आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में आपको कुछ नहीं मिलेगा वोल्टेज तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो द वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट डीसी आउटपुट इज लाइक दैट and in the full wave in the positive as well as in the negative half cycle you will get output voltage with the maximum value of Vm, right? In the bridge type full wave rectifier it is also the same waveform will get like that of full wave rectifier. Now what is DC output? How to calculate? Statistically how to calculate? As you know that the rectifier will convert AC to DC. Rectifier क्या करता है AC to DC convert करता है लेकिन DC आउटपुट कितना मिलता है एवरेज सो हाउ टू कैलकुलेट Vm बाय पा V में मतलब मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू ये वाली डिवाइडेड बाय पाई फुल वेव रेक्टिफायर की कैसे निकालोगे 2Vm बाय पाई यहाँ पे भी 2Vm बाय पाई गॉट इट नाउ रिपल फैक्टर सो व्हाट इज दैट रिपल फैक्टर so you need to remember this value but I'll tell you what is that ripple factor half wave rectifier की 1.21 0.48 and यहाँ पे भी 0.28 नो रिपल फैक्टर मैंने क्या बोला था आपको नॉर्मली रेक्टिफायर क्या करता है एसी सिग्नल टू मतलब ये मेरा जो अल्टरनेटिंग सिग्नल है ये वाला यस और नो इसका कन्वर्जन किस में करता है डीसी दैट इज डायरेक्ट करंट बट हमें डायरेक्ट करंट मिलता है क्या नो पल्सेटिंग डीसी मिलता है पल्सेटिंग डीसी मतलब ये वाला पल्स काइंड ऑफ डीसी यस और नो हमें डायरेक्ट कांस्टेंट ये मिलता है क्या नहीं मिलता है ओके तो रिपल फैक्टर मतलब how many ripples are present instead of this constant DC. That value is 1.21, 0.48, 0.482. Now we'll see the definition of ripple factors. So ripple factor is what? It measures the ripple content in the load voltage or current. Okay. So ripple factor is defined how to calculate the ratio of effective value of alternating component of rectified voltage that is VAC or current to the average value that is input VAC by VDC. Okay. So this way you can calculate the ripple factor of half wave rectifier. The value is 1.21, 0.48 and यहाँ पे भी 0.48. Now, what is rectification efficiency? So efficiency of half wave rectifier is what? 40.6%, 81.2 and 81.2. Now what is efficiency कैसे निकालते हैं? So efficiency का formula VDC that is output DC voltage divided by root mean square voltage का square. This is your efficiency of the rectifier. Okay. Now peak inverse voltage very important. So यहाँ पे क्या है half wave में Vm यहाँ पे 2Vm यहाँ पे Va. Okay. तो peak inverse voltage क्या है? The maximum reverse bias potential that can be applied before entering the breakdown region. It's called as a peak inverse voltage. Okay. तो इसकी वैल्यू क्या है पीक इनवर्स की हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm एंड ब्रिज वेव में एंड फुल वेव रेक्टिफायर में इट इज 2Vm सॉरी ब्रिज वेव में भी VME राइट नाउ AC आउटपुट इज व्हाट Vm by 2 Vm by root 2 and Vm by 2. Now I have told you in the video of full wave and bridge wave the waveforms are same in case of full wave and bridge wave. Where is the difference? Yes, where is the difference? Only here secondary voltage is 2Vm यहाँ पे Vm है and peak inverse voltage यहाँ पे 2Vm है यहाँ पे भी rest of the components are same. Got it? Thanks for the watching. If you have any doubt you can ask in the comment section.